Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with Lecture Monday with the next part of technical terms to be learnt in plant breeding. Starting with the next one, that is homologous chromosomes. We already saw homologous chromosome. Today we'll see homologous chromosome that are identical with each other in gene content and morphology. And two homologous chromosomes regularly pair to form one bivalent during meiosis. तो मियोसिस में जो बाइवेलेंट बनता है वो होमोलोगस के बीच में बनता है और जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है ओके नेक्स्ट वन इज homozygosity, that is frequency of gene in homozygous condition in a population. नेक्स्ट वन इज होमोजाइगस, वो इंडिविजुअल जिसमें दो या दो से ज्यादा आइडेंटिकल अलील हो एक जीन का ऑफ द सेम जीन. नेक्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस जो होता है वो दो तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस. तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस वो होता है दैट इज गवर्न्ड बाय पॉलीजीन्स एंड इज नॉन स्पेसिफिक. वही जब वर्टिकल पढ़ेंगे तो विल सी दैट इट इज गवर्न्ड बाय ओलिगोजीन्स एंड इज स्पेसिफिक. Next is host, that is organism attacked by a pathogen. In recombinant DNA technology, the organism into which recombinant DNA is cloned. Next one is host tester. नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग को टेस्ट करना है किसी चीज को, डिफरेंट बायोटाइप्स को, रेसेस को टेस्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, जो कि जनरली यूज होता है पैथोलॉजिस्ट से थ्रू. दैट इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंशियल होस्ट. Next is hybrid. Progeny from hybridization between two or more strains. We all know this. Next is hybrid incompatibility. दैट इज जिसमें जाइगोट बनने के बाद कुछ ऐसा बैरियर आ जा रहा है जिसके वजह से जाइगोट का पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है. पोस्ट zygotic barriers to zygote development. Inability of hybrid zygote to develop into normal fertile plant. So that's it for the day, guys. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up till that. Take care. Bye bye.